की जो खेती है ये कम पानी की खेती होती है, एक आध दो पानी में ही इसका उत्पादन हो जाता है और इसके कारण जो हमारा भूजल का जो स्तर है जो घटता जा रहा है उसकी भी सुरक्षा की जा सकती है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलेट्स पोषण युक्त है, मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम मिलेट्स उत्पादों को शामिल करें। इसके माध्यम से हम भारतवासियों के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकेंगे। मिलेट्स की अधिक से अधिक खपत होने के कारण किसान भी इसके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके माध्यम से गांव की भी जो आर्थिक समृद्धि है उसका भी मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप जी। ऑनरेबल श्री वाइको, concern over frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lankan Navy. Mr. Deputy Chairman, sir, thank you very much for the opportunity given to me. Sir, Sri Lankan Navy is continuously attacking our Tamil fishermen. About 800 fishermen were shot dead and thousands of fishermen were brutally attacked and their boats and fishing trawlers were damaged and fishing nets destroyed in the past. Recently, they have started capturing the boats and put them into action. Unfortunately, it has become a real story. There have been several incidents of Sri Lankan Navy personnel even firing at Indian fishermen in the Pak Strait and seizing their boats, damaging their boats and high-handedness by the Sri Lankan forces. Recently, 22 fishermen were arrested by Sri Lankan Navy. The frequent arrest and seizure of boats had shattered the livelihood of many fishermen. I would urge upon the Union government to take urgent steps to secure release of all the fishermen and their boats unconditionally. The government should also put diplomatic pressure on the Sri Lankan government for giving compensation and solatium to the next of kin who were shot dead and boats damaged by the Sri Lankan Navy. They should hold a high-level talk to find a permanent solution to this non-stop harassment to our fishermen by the Sri Lankan Navy. So, Tamil Nadu fishermen, are they not the citizens of India? If they are citizens of India, what Navy is doing there? It is sitting like a lame duck in the Bay of Bengal. Thank you. Honorable Sri GVL Narsim Rao, concern over attempts to ridicule Sanatan Dharma. Please. Thank you, sir. Sir, a minister in the state government of Tamil Nadu indulged in hate speech against Sanatan Dharma and Hindu religion. I quote what he said. Sir, Sanatan Dharma is like malaria and dengue, and so it must be eradicated and not opposed. These are statements by a minister in a state government. And sir, another minister in the same state government, higher education minister, said the purpose of formation of INDIA alliance is for the eradication of Sanatan Dharma. This is the agenda. Is this the kind of anti-India agenda that they want to pursue? So, another minister in Karnataka government, who also happens to be the son of Congress president, who is also a leader of the opposition in Rajya Sabha, he supported those comments. This is the agenda of INDIA alliance. Sir, this constitutes hate speech. Honorable Supreme Court, in its directions, clearly stated that offences under 295A, under 505, 153A, 153B, they all constitute hate speech. Sir, deliberate and a malified act intended to outrage religious sentiments. This is what it was intended for. There was also an attempt to create public mischief. Therefore, I call upon the state government, Tamil Nadu, to, on its own, register FIR against the same ministers who spoke against Sanatan Dharma, and also dismiss these ministers from the state government, because what they have
what they have publicly stated is a violation of the oath they have taken under the Constitution. The Constitution allows every religion, every member, every sect to practice its faith and to even propagate it. And here you have ministers in the state governments who are campaigning against Sanatan Dharma and calling for its eradication. So therefore, sir, I appeal that cases should be booked against the concerned ministers and they must be dismissed without any further delay. So this is nothing but an act to destroy the fabric of religion in India. This is to destroy social fabric. If this is an agenda for any political party, that will be dangerous to India. Therefore, I appeal, I demand an apology. I demand an apology from the... Not going on record now. Time is over. Your time is up, please. Honorable Binay Biswam. Honorable Binay Biswam. Please. Honorable Binay Biswam. Please. Honorable Binay Biswam. Your subject is, please, demand to provide decent wages along with the meaningful engagement comes to all government-sponsored distance workers. Make the house in order. Please. Make the house in order, sir. Please speak, it will be in order. Please Make the house speak. in order, sir, please. Please speak. Please, there is no discussion. Honorable Tiruchi Sivaji, please take your seat. Please take your seat. All the members who are standing, please take your seat. You please speak. So I begin with the house. Please, Binay Biswamji, please speak. Yes, sir. Thank you, sir. Please. Thank you, sir. Please. Binay Biswamji, please speak. Binay Biswam, please. You totally give the false So I'm going on another name. Please, Binay Biswamji, then Yes, please, sir. Please. Now my time begins. Yes. Sir, I stand before you. Please, nobody. Please speak. Sir, please begin my time now. It has already begun. The time has already begun. No, Please. no, no. Just now I began. Please Just now I speak. began. Please speak. Sir, please. I stand before you to bring to the plight of the scheme workers of the country. They are in lakhs in numbers. They belong to the ASHA workers, Anganwadi workers, and midday meal workers. Sir, the government and this house has a duty to look deep into their living conditions. Sir, those people are not living. They are simply surviving on paltry wages. We talk about them in high words like global health leaders, warriors for the country. Sometimes we name them during COVID days. But when the livelihood comes, we always forget them. High time to think about them. Sir, the ASHA workers, the accredited social health activists, they are doing immense service for the nation. In every field of life, they are the first point of healthcare, social security, and everything. But their concerns are not always. So Anganwadi workers, they are the first meeting point for the children of the country. They teach them, they feed them, and they open their eyes to the world. But what we do for them? Nothing to them, sir. The same way, the midday workers, meal workers, midday meal, they work for the food security also. But lakhs of them are counting their days for their decent wages, sir. High time this government should pay attention to them. We call them as volunteers. Calling them volunteers, we deny them the right of the workers. We have to treat them as workers. We have to see that their wages are fixed, a decent wages to live. And we have to treat them and make their engagement conditions a decent one. Not going on record now. Please. Honorable Sri Sushil Kumar Modi, concerned over increasing incidents of suicide, deaths of students in higher educational institutes. Honorable Sushil Kumar Modi. उपसभापति महोदय, राजस्थान के कोटा में और इस वर्ष 26वां आत्महत्या की घटना घट चुकी है। पिछले एक साल में
प्लीज टेक इट। पिछले एक साल में और आत्महत्या की 26 घटना और कोटा राजस्थान में घट चुकी है। और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 5-6 वर्षों में प्रति वर्ष 25 से 30 नौजवान और आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो आईआईटी, आईआईएम, एनआईआईटी और जो देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर भी प्रति वर्ष बड़ी संख्या में नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार के लिए चिंता का विषय, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान आत्महत्या करने के लिए क्यों बाध्य हो रहे हैं। कोटा राजस्थान में जो लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आते हैं, उन पर इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है उत्तीर्ण होने के लिए, कि वो लोग आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और उसी प्रकार आईआईटी, आईआईएम वगैरह जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां पर भी बढ़ती हुई आत्महत्या की घटना ये चिंता का विषय है। मैं सरकारों से ये मांग करता हूं कि एक तो एक आयोग का गठन किया जाए जो इस बात की जांच करे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनकी बहाली की जाए, ताकि वैसे लड़के जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनकी वो काउंसलिंग कर सके। ऐसे केंद्रों में मेंटल हेल्थ क्लिनिक की भी स्थापना की जाए, ताकि जो लड़के डिप्रेशन में हैं वो लड़के वहां जाकर अपना इलाज करा सके या काउंसलिंग प्राप्त कर सके। साथ ही साथ जो आईआईटी, आईआईएम वगैरह के जो कोर्सेज हैं, खास करके कोचिंग के, उसके बारे में पुनर्विचार किया जाए कि इतना प्रेशर है और इस प्रकार का कठिन सिलेबस है कि उसको उत्तीर्ण होना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो सरकार को उसके पूरे सिलेबस को भी रीडिजाइन करने के बारे में विचार करना चाहिए। और खास करके कोटा और अन्य कोचिंग संस्थानों में हर किसी का जो नामांकन हो रहा है, पैसे के लिए कोचिंग संस्थान जो भी लड़के वहां पर आते हैं उनका वो एडमिशन ले लेते, क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है। तो उसके बारे में भी और रोक लगाई जाए। जो बहुत मेधावी छात्र हैं, जो time is thank you. Dr. Lakshmikant Bajpayee ji, issue of intervention by big houses in MSME sector. क्या विषय है जी? Issue of intervention by big business houses in MSME sector. पता ही नहीं हमें, तो 0 आवर की सूची में भी नहीं है। आपका 0 आवर में यही लिस्टेड है? नहीं लिस्टेड है। डॉक्टर एल हनुमंतैया demand to take preventive steps to address rising problems of malnutrition and anemia across the country. Please, माननीय सदस्यगण, जिनका नाम सूची में है उसी अनुसार मैं बुला रहा हूँ। प्लीज टेक योर सीट। सर, जिनके नाम नहीं है मैं नहीं बुला रहा हूँ, जिनके नाम है वही बुला रहा हूँ। प्लीज, डॉक्टर एल हनुमंतैया। सर, thank you, Chairman, sir. Please. I rise to Madam, 1 minute. Sir, I rise today to urgently address the pervasive issues of malnutrition and anemia plaguing millions of people across the country, sir. Sir, despite economic progress, our nation grapples with alarming rates, particularly affecting vulnerable population like children, women, and the marginalized sections of the society, sir. Sir, in the latest NFHS report, data 1921, the prevalence of anemia has shown a significant increase, with children aged 6 months to 5 years experiencing a jump from 59% to 67%, sir. Sir, this is an alarming state of affairs. Sir, women especially in rural areas, high rates of anemia adversely affecting maternal health and contributing to pregnancy complications.
Sir, an increase in the anemia prevalence from 53% to 57% in all women aged between 15 years to 49 years seen, and 50.4% to 52.2% in pregnant women rooted in poverty, lack of education, inadequate health care, and unequal resource distribution or malnutrition problems. Sir, factors such as food insecurity, limited access to clean water, and inefficient healthcare infrastructure contribute to unmet nutritional needs. Sir, my request to the government, addressing these issues is not only a social responsibility, but a prerequisite for a thriving and resilient nation. Sir, the consequences extend beyond individual suffering, impacting the workforce, educational outcomes, and overall economic productivity of the nation. Sir, therefore, I urge the Ministry of Health and Family Welfare to take immediate steps to address the rising problems of malnutrition and anemia, especially among women and children across the country. Sir, let me unite in our commitment to building a healthier, strong India. Time is over, Hanumanteya ji. Time is over. Thank you, Hanumanteya ji. Honorable members, in 0 hour, matters are raised with permission of Honorable Chairman. Merely presence in ballot does not mean admittance. Further matters already raised are not included again. Raise. Dr. Lakshmikant Bajpayee. Dr. Lakshmikant Bajpayee. माननीय उपसभापति जी, प्लीज। मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और समाज के उन सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति है जो गांव में और छोटे छोटे शहरों और कस्बों में सुनार का दर्जी का काम करते हैं। धीरे धीरे एमएसएमई सेक्टर में भी बड़े घरानों का प्रवेश योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। ये ठीक है कि हम किसी को व्यवसाय करने से नहीं रोक सकते, लेकिन किसी बड़े घराने अगर तनिष्क के नाम से टाटा करेगा जेवर का व्यापार, तो गरीब सुनार या शराब जो शहरों में और कस्बों में बैठे हैं वो क्या काम करेंगे। इसी प्रकार कपड़े को सिलने का काम जो है वो भी टाटा बड़े घराने ले जा रहे हैं। मेरा इस प्रश्न के माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि ये ठीक है कि किसी को रोजगार करने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर का बचाव हो सके और एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आने वाले छोटे कारीगर, छोटे व्यापारी बचे रह सकें, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। माननीय श्री बाबूभाई देसाई, माननीय बाबूभाई देसाई, प्लीज। महोदय, आज आपने मुझे संसद बनने के बाद उसमें प्रथम बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। आज मैं हमारे समय की एक तत्काल और निर्णायक चुनौती जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए उसके सामने खड़ा हूँ। हमारा यह मानवीय गतिविधियों के कारण अभूतपूर्व परिवर्तनों से गुजर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि, मौसम के पैटर्न में बदलाव और असंख्य परिस्थितियों व्यवस्थापन उत्पन्न हुए हैं। वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है, जलवायु परिवर्तन हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और जीवन जैसी शैली के लिए गंभीर खतरा है। हमें सिर्फ फर्क पिघलने से अधिक लगातार और गंभीर मौसम की घटनाओं और जैव विविधता के नुकसान के गवाह है। मैं यह सहज चेतावनियों नहीं है, ये कठोर वास्तविकता है और जो हमें तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने की मांग करती है। भावी पीढ़ियों के लिए यही की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस परिवर्तन को कम करना चाहिए और जिम्मेदार खपत और उत्पादन के बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सभी क्षेत्रों, सीमाओं और राजनैतिक विचारधाराओं में सहयोग की आवश्यकता है। कानून निर्माताओं के रूप में हमारे पास
नीतियां बनाने की शक्ति है, जो नवाचार की प्रोत्साहन करती है, नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश करती है और उद्योगों के उनके पर्यावरण प्रभाव के लिए जवाबदेह बनाती है। आइए हम अल्पकालिक लाभ से अधिक अपने ग्रह की भलाई को प्राथमिकता है और एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें यहाँ स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्थिर जलवायु सुनिश्चित हो। निष्क्रियता में कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी, कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट डीप फेक्स। माननीय विप्लव कुमार देव, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान जी, डिमांड टू स्टार्ट न्यू रूट फॉर वंदे भारत। मुजीबुल्लाह खान जी सर, प्लीज, आपका समय शुरू हो गया है। thank you, sir. In order to meet Odisha's demand for connectivity, very necessary for Odisha to have great connectivity various region, and witness that Vande Bharat train between Puri and Howrah in West Bengal, along with a recent addition of a train between Puri and Raulkela connectivity, the same massive practical and reading towards it is impressive further Vande Bharat Express train to be introduced in Odisha. The state of Odisha has suffered a neglect from the central government as reflected by its poor rail connectivity. Further, the degree of connectivity is spread across the region of Odisha. For instance, there are very few express trains connecting between Odisha and Bhubaneswar. Between Odisha and Bhubaneswar, both the express train mentioned above by the track towards the another part of Odisha. The proposal for a new connectivity in running between Bhubaneswar and Hyderabad by some having a Vande Bharat between two hubs will the travel time reduce travel time 7 hours. A major complaint death of trains running between the two locations. This new introduction will lead to further connectivities of passengers, will give a much needed push a connectivity. Thank you. थैंक यू। धन्यवाद श्री मुजीबुल्लाह खान जी। माननीय श्रीमती संगीता यादव, कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेंटली चैलेंज्ड पीपल। माननीय संगीता यादव जी, माननीय संगीता यादव जी, प्लीज। नहीं, जीरो आवर नहीं लगा। कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेंटली चैलेंज्ड पीपल। माननीय सदस्य, आप जो आप देते हैं यहाँ बोलने के लिए, उन विषय पे ध्यान रखें और बोलें प्लीज। सॉरी सर, आज मैंने देखा नहीं, कल लगा था मेरा। धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस टू लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। माननीय उपसभापति महोदय, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से
और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है। लेकिन दुखद है, इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और मेयर तक, जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की। उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और Not going on. Thank you. माननीय श्री विक्रमजीत सिंह साहनी जी, डिमांड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म नेशनल लेवल पैरामीटर फॉर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। माननीय विक्रमजीत सिंह साहनी जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय सदस्य, 0 आवर आप देते हैं तो उसके महत्व को समझना भी चाहिए, उस वक्त मौजूद भी रहना चाहिए। अगर हाउस में है तब आपका ध्यान उस पर नहीं है तो ये आपके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय। बैठे आप, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, आप जानते हैं रूल्स को राघव जी, फिर भी आप पूछें प्लीज। डॉक्टर फौजिया खान जी, रिक्वेस्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ मिसिंग वीमेन इन इंडिया। डॉक्टर फौजिया खान जी, प्लीज। Thank you, sir. Sir, the issue of missing women in the country is alarming, with 10,61,648 women alone in the years 18 and above, and 2,50,430 girls below 18 years have reported missing between 2019 and 2021. Over 2 lakh women went missing in the state of Madhya Pradesh alone between the year 2019 and 2021, sir. Yet, the reasons have remained undisclosed. Sir, the suspected reasons behind the disappearance of these women are diverse, like trafficking, trade, and in minuscule cases, elopement. Tackling this issue requires collective action on various fronts: strengthening law enforcement to identify trafficking networks, enhancing border control, establishing a database for accurate identification of the reasons for the disappearances. Additionally, the numbers have come as a surprise to many, indicating the lack of awareness of the incidents of disappearance of women. Therefore, public awareness campaigns, community involvement, educational programs can help prevent vulnerable individuals from falling prey to traffickers. Despite designated stop centers,
The unprecedented increase in numbers suggests the possibility of organized criminal activities, sir. A recommendation to address the issue of missing women involves the establishment and maintenance of a comprehensive register by the government documenting details of every woman reported missing. This register should serve as a centralized database enabling efficiency tracking and tracing efforts. Sir, additionally, specialized teams should be formed to investigate each case with a focus on identifying potential foul play. These teams could comprise experts from law enforcement, social services, and legal professionals to ensure a thorough and coordinated approach in understanding the circumstances behind each disappearance to ensure accountability and effectiveness. Sir, this issue is of grave concern. How can women go missing like this? Just without any reason, women missing is a grave issue, sir. The government must pay attention to this. Shri Rajiv Shukla, concern over poor state of under trials and the imperative for judicial reforms. Not present. Shri Kailash Soni, demand to add biography of Shri Jayaprakash Narayan in academic syllabus. आपके माध्यम से मैं सरकार के समक्ष एक देश के महत्वपूर्ण मुद्दे को रखना चाहता हूं। इस देश के मूर्धन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सर्वोदयी नेता, दुनिया की सभी देशों की समाज व्यवस्था, वहां की राजनीतिक विचारों को नजदीक से देखने वाले, पाश्चात्य जगत के लोगों को, विशेषकर श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष करने वाले, देश की सभी विचारधाराओं के ज्ञाता, उन्हें नजदीक से जीने वाले, उन विचारों को जीने वाले, लोकतंत्र के शोधकर्ता, प्रयोगशाला रहे, हिंदुस्तान की दूसरी आजादी, आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करने वाले। Question hour. Question number 16, Shri Sanjay Raut. Honorable Minister, supplementary one, Shri Sanjay Raut. सर आजकल मैं देख रहा हूं बैंकों में, देश भर के बैंकों में ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड्स, फोर्जरी के केस सामने आ रहे हैं। लेकिन उसमें अगर सरकार की एजेंसी भी शामिल हो तो चिंता की विषय है। सर, केंद्र सरकार ने मल्टीपल इंश्योरेंस और पेंशन की बहुत सी योजनाएं शुरू की है आम जनता के लिए, लेकिन जो तथ्य, जो फैक्ट सामने आया है, मुझे लगता है ये इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, ये बिगेस्ट बैंक का स्कैम उसमें नजर आ रहा है। संजय जी, आस्क योर पॉइंटेड क्वेश्चन। सर, ये जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, मेरी जानकारी से जब कोई ग्राहक 10-15 साल के लिए पॉलिसी साइन करता है तो प्रीमियम के लिए सहमति भी देता है, जो उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। अधिकांश ग्राहक 2 से 3 वर्षों में के बाद प्रीमियम का भुगतान बंद कर देता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के पास बहुत सारा अनक्लेम फंड पड़ा हुआ है। और बैंक दावा करता है कि ये जो आकस्मिक बीमा कवरेज है, जो बैंकों द्वारा चार्ज की गई प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा खातों धारकों की सामाजिक सुरक्षा पर खर्च की जाती है। संजय जी, प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, गत 3 वर्षों में
दुर्घटना बीमा क्लेम के रूप में कितने परिवारों को आपने ये राशि वितरित की है? ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, सभागृह के ज्येष्ठ सदस्य संजय जी राउत, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज किया है। सरकार के माध्यम से दो महत्वपूर्ण स्कीम्स है जो गरीब लोगों के लिए और अनप्रिविलेज लोगों के लिए चलती है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो और पेंशन योजना जो अटल पेंशन योजना है। इनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो लास्ट 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 3 साल में जो कलेक्शन हो चुका है या इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं अभी तक के क्यूमुलेटिव अगर इफेक्ट देखें तो 18 करोड़ 50 लाख 71 हजार इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है जिन्होंने विथ मैंडेट इंश्योरेंस का रहा है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 41 करोड़ 59 लाख लोगों को फायदा क्यूमुलेटिव हो चुका है। अगर उसका अगर देखें ये दोनों स्कीम के माध्यम से अगर जनता को जो फायदा मिल चुका है वो 7,46,675 यानी क्यूमुलेटिव मैं बात कर रहा हूं। और अगर अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट भी 14 करोड़ 32 लाख से 274 मिला है। तो ऐसी ये दो स्कीम्स जो प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है उनके लिए वैसा कोई ये नहीं है कि जो बैंकिंग के पास ज़्यादा ये है। पहले 3 साल में तो ये स्कीम लॉस में चल रही थी और बाद में रिव्यू करके इसी को अभी जो प्रीमियम 12 रुपीज़ था वो 20 रुपये किया है और जो जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये था अभी 436 रुपये किया है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संजय राउत। प्रश्न अलग था, आपने जवाब अलग दिया है। मैंने ये पूछा था कि विदाउट कंसेंट आप बैंक अकाउंट से प्रीमियम आप जमा कर रहे हो, ये मेरा सवाल था, लेकिन मैं आगे पूछता हूं। हाँ दीजिए। क्लियर मैंडेट है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के अगर कस्टमर से पैसा लेना है तो उनका सिग्नेचर लेना जरूरी है, उनका कंसेंट लेना जरूरी है। उसके सिवाय पैसा कटा नहीं जाता और उनका इंस्टॉलमेंट नहीं लिया जाता। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। श्री संजय राउत, सेकंड सप्लीमेंट्री। एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना है और सरकार उसमें मुआवजा देती है, लेकिन एक्सीडेंट में व्यक्ति के हाथ पांव आंख या ऑर्गन डैमेज होने पर आप मुआवजा देते हैं या उनकी मौत होनी चाहिए मृत्यु के बाद ही देते हैं, क्लियर नहीं। एक्सीडेंट बीमा योजना के बारे में पूछ रहा हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, ये एक्सीडेंट योजना में क्लियर है जिसमें अगर डेथ हो गया इट इज एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंट का डेफिनेशन भी दिया है गवर्नमेंट के माध्यम से। एक्सेप्ट सुसाइड ऑल डेथ्स आर कंसिडर्ड एज एक्सीडेंट डेथ एक्सेप्ट सुसाइड एंड एक्सेप्ट विलनेस। मींस एक्सीडेंट होना चाहिए, देयर शुड बी हिट फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज एक्सीडेंट। अगर सुसाइड किया तो एक्सीडेंट नहीं माना जाता। इवन आई एम सेइंग मर्डर भी किया तो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट और उसको इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। अगर इसी में 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, अगर उनको इरिकवरेबल 2 आईज चले गए, दैट इज अ परमानेंट डैमेज टू द आईज, देन 1 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर दोनों हाथ चले गए तो उनको 1 लाख मिल सकता है इंश्योरेंस और दोनों पांव चले गए तो उनको 1 लाख इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक आंख चली गई और एक हाथ चला गया, स्टिल ही विल गेट इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। कभी कभी एक हाथ और एक पांव चला गया, कटा गया, तो भी उनको इंश्योरेंस 1 लाख का मिलता है। लेकिन इसमें 2 ऑर्गन्स इज एसेंशियल इन दिस रूल। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री धनंजय महादिक। Thank you, Chairman, sir. I would like to know from the Minister through you, sir, what is the nature of the scheme of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana? Thank you, sir. Honorable Minister. सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसा मैं पहले ही बताया कि ये पुअर लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन के लिए और जो अंडर प्रिविलेज है लोगों के लिए है। इस स्कीम में ओनली 20 रुपए का प्रीमियम 1 साल से दिया जाता है और इसमें भी समझो
1 जून से योजना चलती है, 1 जून से 31 मई तक। अगर किसी ने ये योजना में जैसा 3 महीने के बाद किया तो उसको 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी उनको इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मैंने जैसे बताया, देयर शुड बी अ परमानेंट डैमेज ऑफ द ऑर्गन। अगर ऑर्गन हो गया तो उसमें आईज हो, हैंड्स हो, फुट हो, तो इसका फायदा मिल सकता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो भी 2 लाख उनके जिसके ऊपर नॉमिनी है उनको ये मदद मिल सकती है। और अगर मैं बताना चाहता हूं तो अभी तक इस योजना के माध्यम से 2115 करोड़ का राशि डिस्बर्स हो चुकी है। 2502 करोड़ की राशि यानी लोगों को मदद मिल चुकी है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलता देव। थैंक यू चेयरमैन सर, मुझे सप्लीमेंट्री में बोलने के लिए मौका देने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, भारत में कितने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहे हैं? और देखा जाए तो मैं तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछूंगी कि यहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होते हैं सालों में, उसमें कितना परसेंटेज रिन्यूअल अमाउंट लेना चाहिए? कोई गाइडलाइन है क्या? अगर है तो उस हिसाब से वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि मुझे जितना पता है जो सीनियर सिटीजन वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिन्यूअल अमाउंट आता है, कभी कभी डबल हो जाता है रिन्यूअल अमाउंट। ये तो मरता क्या ना करता। ये तो हम उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं तो मैं बोलूँगी कि मेरे स्टेट में भी ऐसा हो रहा है, मगर ये हमारे यहाँ पर बीजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड है जो नवीन पटनायक जी ने बनाया हुआ है, करीबन 1 करोड़ फैमिली को बिलोंग्स दिया गया है वो कार्ड। मगर उससे बाद में जो इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं? अगर है तो कितना लेना चाहिए, मुझे वही जानना है। थैंक यू सो मच सर। माननीय सभापति महोदय, इंश्योरेंस के बारे में जो पहला क्वेश्चन था उसमें इंश्योरेंस के बारे में अलग अलग कंपनी हमारे देश में है, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट के इंश्योरेंस की कंपनी लिए तो गवर्नमेंट में नेशनल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस भी है। और अगर प्राइवेट की बात करें तो बजाज अलायंस है, चलो मंडलम, एमएस जनरल इंश्योरेंस है, फ्यूचर, नंबर ऑफ कंपनीज है, आईसीआईसीआई है, लोम्बार्ड इंश्योरेंस है, बजाज इंश्योरेंस है, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस है, रिलायंस इंश्योरेंस है, टाटा एआईजी इंश्योरेंस है, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हेल्थ के बारे में क्या है। मैं एक डॉक्टर हूं और बताना चाहता हूं सर कि सबसे ज्यादा और सबसे पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड होगा तो आयुष्मान भारत कार्ड है। और आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ तक इंश्योरेंस मिला है लोगों को, और जिसमें नॉट ओनली द वन पेशेंट, वन पर्सन जिसका इंश्योरेंस किया है, लेकिन पूरे फैमिली को 5 जन को इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें 5 लाख तक उसकी सुविधा मिल सकती है। और उसमें कुछ रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स भी है, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फायदा हो सकता है। और उसी के साथ इसके साथ मैं बताना चाहता हूं जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, अलग अलग स्कीम्स है, सुरक्षा बीमा योजना है, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस में। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर अमी याजनिक। For giving me this opportunity. I have a very serious and relevant question to the Honorable Minister of Finance regarding these particular 2 schemes. Both the schemes, the banks act as enrolling agents. The policy is issued by the insurance companies, but the entire premium is paid by the client. Now the consent is taken of the client, but complaints are galore on social media as well as complaint forums that they are not aware whether they are insured or not. So where should they claim? So whether the Honorable Minister will initiate some kind of a data collection inquiry from IRDAI, the Insurance Regulatory Authority, and the Department of Financial Services, whether these banks' audited accounts are reflecting these amounts of who are these persons who need this insurance, and whether with which company they have a tie-up. Does the client know? Sir, it is a very serious issue. The complaint is galore, and I would like the Honorable Minister to give me a reply or tell me whether there is going to be a proper inquiry of this data collection. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभागृह को बताना चाहता हूं,
ये जो इंश्योरेंस है जो जिसमें मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों इंश्योरेंस स्कीम में इंश्योरेंस का कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। लेकिन जब कभी जो मैंडेट के माध्यम से 20 रुपए या 436 रुपए उनसे अकाउंट से लिया जाता है, फॉर्म भरे जाता है, उसका स्लिप दिया जाता है और वही उसी को ही इंश्योरेंस बोल के किया जाता है। और जैसा माननीय मैडम ने पूछा है कि इसके बाद जैसा बैंक इज कलेक्टिंग मनी बट इट इज गिवन टू द पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ बैंक टाइप होती है और कस्टमर को पता दिया जाता है कि ये कस्टमर ये बैंक है क्या, बैंक को लगाया जाता है कि ये बैंक में ही लगाया जाता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी से टाइप है, इसके साथ ही होता है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं अकोमोडेशन, जैसा मैं बताया कि जो अगर क्लेम करना है तो बैंक में भी ओम्बड्समैन रहते हैं और इंश्योरेंस कंपनी जैसा इरडाई की बात की, इरडाई के माध्यम से भी ओम्बड्समैन रहते हैं और उसके माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ कंप्लेन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 श्री प्रमोद तिवारी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1 श्री प्रमोद तिवारी। मैं आभारी हूं आपका, ये एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्रश्न पर आपने मुझे मौका दिया है। योजना का प्रचार प्रसार तो बहुत है, पर जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं सरकार ने वो नगण्य। माननीय मंत्री जी के जवाब देख रहा था मैं, 1 दिसंबर 2023 तक 2,50,00,000 रुपए इस पर खर्च हुआ है। इसमें कितना विज्ञापन में गया होगा ये समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, बहुत ही पॉइंटेड सवाल है मेरा, कि देश की आवश्यकता के अनुसार कितने डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए और इस समय देश में कितने उपलब्ध हैं। इस अंतर को पाटने के लिए क्या कोई स्कीम, कोई व्यापक प्रयास, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि देश की हेल्थ सिस्टम कैसे मजबूत हो। तो हमारी दोनों मॉडर्न मेडिसिन और आयुष सिस्टम दोनों बहुत ही अच्छी तरह से काम करें। और वैसे एक क्वेश्चन आयुष से रिलेटेड है और ये आयुष मिनिस्ट्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ही बनाई है और खुद ने सजावट की है। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम आयुष्मान भारत के बारे में है। तो उसमें कुल अभी तक आयुष मेडिकल कॉलेज 2014 में 523 थी, वो 2022 में 780 और ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट सीट्स भी 74% की बढ़ोतरी है। तो 23,974 सीट्स की बढ़ोतरी है। ऐसे पीजी सीट से वो भी 2,102 की बढ़ोतरी 41% रही थी। और ये आयुष्मान भारत सेंटर में हर सेंटर में एक डॉक्टर होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। और ऐसे ही खुद प्रधानमंत्री ने तो ये आयुष्मान भारत का जो हॉस्पिटल था, उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया है। और आज ये सेंटर बहुत ही अच्छी तरह से काम करे और हर देश में अभी आयुष और मॉडर्न मेडिसिन के दोनों के डॉक्टर बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारा जो गुणोत्तर था उसके आसपास ही काम कर रहे हैं। और कम से कम आज आपको हम बताएं तो कुल ड्यूरिंग हमारी आज का ये क्वेश्चन के अनुरूप फाइनेंशियल 2021-22 में 100 आयुष डॉक्टर्स और 36 अदर पर्सन, वो 2 स्टेट में हमने एजुकेट आयुष इसके बारे में ये ट्रेनिंग दिया है। 1564 आयुष टीचर्स 10 स्टेट के, 421 आयुष डॉक्टर 6 स्टेट के, 22 आयुष पैरामेडिक्स
in one state and 327 other person in 7 state. हमने ये आयुर्ज्ञान स्कीम के अंडर ट्रेनिंग दी। इसके अलावा ईयर 2023-24 में ये लास्ट 8 मंथ में 527 आयुष टीचर्स 7 स्टेट के, 186 आयुष डॉक्टर्स इन 3 स्टेट्स, 30 आयुष पैरामेडिक्स इन 1 स्टेट एंड 117 अदर पर्सनल जो 3 स्टेट के हमने सीएमई कंपोनेंट और इसकी आयुर्ज्ञान स्कीम के अंडर ट्रीट किए। ऐसे ही हमारी दूसरी भी हमारी जो हमारी जयपुर की एनआई है, इसके द्वारा ITR और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा भी स्टूडेंट्स को हम टीच करते हैं। तो ऐसे सब डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जो हमारे हैं उसको आज बहुत ही अच्छी तरह से काम करें। थैंक यू सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री प्रमोद तिवारी। सर बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा का मैं समर्थक हूँ और चाहता हूँ कि इसका ज्यादा से ज्यादा विकास प्रचार हो। पर मैंने सवाल सिर्फ सीधा सा पूछा था, कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है, फार्मासिस्ट की और जो पैरा स्टाफ, और उसके अनुपात में कहाँ आया? नहीं आया। दोबारा मैं चाहूंगा अगर जवाब दे तो अच्छा है, पर एक सवाल मेरा और सुझाव भी है। सवाल के रूप में मैं पूछ रहा हूँ। सुझाव पहले दीजिए और सवाल बाद में पूछिए। ठीक है सर, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें दावा है कि सबको कवर किया जाएगा। अगर माननीय मंत्री जी को जानकारी है तो ये बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग शामिल नहीं है, तो क्या इसको शामिल कराने का कोई इरादा है? अगर है तो मैं स्वागत करूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, आज हमारे सदन की एक बड़ी सदस्य ने जो सवाल की है बड़े रेलिवेंट है। स्वास्थ्य सेक्टर में आज एक एग्जाम्पलरी ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 9.5 साल की कार्यकाल में उन्होंने आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो भी कदम उठाए हैं, देशवासियों ने, दुनिया ने इसको देखे है और महसूस भी की है, और उसमें से सबको सेवा भी मिली है। सबको मुझे लगता है कि काफी अपने शारीरिक समस्या से राहत भी मिली है। तो इसलिए माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो सवाल की है, हमारे ये जो सेंट्रल सेक्टर आयुर्ज्ञान के जरिए जो भी हमारे डॉक्टर्स है, जो टीचर्स है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नॉन आयुष साइंटिस्ट है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, सबको उनकी मतलब एम्पावरमेंट के सिलसिले में, अपस्किल के सिलसिले में उनकी क्षमता बढ़ाया जाए। उनकी इसके लिए उनको अधिक काबिलियत बनाने के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में वो व्यवस्था रखा गया है। तो आपका सवाल है कि आज ये जो आपने कहा कि मतलब प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हमें ये निर्देश दी है कि दोनों सिस्टम को एक साथ आप आगे बढ़ाए। दोनों सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो निर्देश दी थी, उसी निर्देश को हम निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पिछली 2 साल एक साथ हम लोग काम किया है। और आज एम्स से लेकर अप टू द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक, सब सेंटर तक, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हर सेंटर में दोनों सिस्टम उपलब्ध हो, इसके लिए जो भी निर्देश दी है उसको हम लोगों ने उसको सही लागू करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और हम लोग कर रहा है। तो इसलिए आपका जो सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि दोनों मिनिस्ट्री का लक्ष्य एक ही है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ।
अगर एक ही लक्ष्य है, एक साथ क्यों नहीं काम करें? तो इसलिए एक होलिस्टिक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने के सिलसिले में जो भी आज सारे प्लानिंग की गई है, जिसको लागू की गई है, मुझे लगता है कि देशवासियों के लिए हो या दुनिया के लिए हो, ये बहुत बड़े एक उदाहरण है और ये निश्चित रूप से होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत बड़ा काम में आएंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर अनिल जैन जी सर। थर्ड सप्लीमेंट्री। माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर देश में ही नहीं दुनिया में आयुष का फैलाव हुआ है और आयुष के प्रति दुनिया के लोगों की श्रद्धा बढ़ी है और दुनिया के लोग आयुष के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं और मैं इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं। कोरोना के समय पे भी मैं मॉडर्न मेडिसिन से आता हूं, मैंने मॉडर्न मेडिसिन के पूरे देश भर के डॉक्टर्स की भी बातचीत की उसके साथ साथ आयुष के लोगों ने कोरोना के समय पर जो योगदान दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर, वो सारी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया है। मैं माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दुनिया में आयुष के प्रति जो लगाव हुआ है और इस प्रकार आयुष के माध्यम से दुनिया के लोग भारत में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, ऐसे आयुष वीजा के लिए हमारे कितने लोगों को वर्तमान में ये वीजा दिया जा रहा है? आगे आने वाले समय में आयुष वीजा कितने लोगों को और दिया जाएगा? सरकार की इसके बारे में क्या नीति है? और आने वाले 5 साल में आयुष को प्रमोट करने के लिए और दुनिया में आयुष के फैलाव के लिए और वीजा बढ़ाया जा सकता है और फैसिलिटीज बढ़ाई जा सकती हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री जी हमको अवगत कराने की कृपा करें। ऑनरेबल मिनिस्टर जी, हमारे आदरणीय अनिल जैन जी ने जो भी सवाल की है, सवाल का जवाब यही है कि अब हेल्थ हिल इन इंडिया, मेडिकल ट्रैवल टूरिज्म और दुनिया की ये हब बने चिकित्सा के सिलसिले में। तो इसलिए दुनिया के अलग अलग प्रांतों से जो भी हमारे आयुर्वेदा चिकित्सा के लिए, आयुष की चिकित्सा के लिए जो भी आना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए एक अलग सा कैटेगरी वीजा नोटिफाइड की गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले दिनों में आज जो व्यवस्था खड़ा हुई है, आप देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता बिहार में जो है, सिर्फ 6 साल के अंदर फुटफॉल 17.5 लाख हो चुका है, 17.5 लाख। और WHO का डायरेक्टर जनरल ने भी एक बड़े डेलीगेशन लेकर उन्होंने भी विजिट किया है और बड़े प्रशंसा की है। साथ साथ में कुछ दिन पहले 12 अफ्रीकन कंट्री की उनके हेड ऑफ द नेशन के डायरेक्शन को वो मानते हुए 12 एम्बेसडर ने भी खुद आया और हमारा व्यवस्था को देखा। तो इसलिए साफ यही है कि हिंदुस्तान में जो भी अभी हॉस्पिटल नेटवर्क बने हैं और साथ साथ में हमारे डॉक्टर्स हो, हमारे टीचर्स हो, हमारा साइंटिस्ट हो, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी स्टाफ को जिस हिसाब से शक्ति गई है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, दुनिया को साथ लेकर दुनिया को स्वास्थ्य सेक्टर में एक बड़े सेवा देने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है, इसलिए उन्होंने ये बात, देखिए आप लोग सुन तो लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को देखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ की हेडक्वार्टर की जो भी प्रीमिसेस में जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल डेमोन्स्ट्रेट की है, जिसका नेतृत्व उन्होंने दी है और 135 देशों का डेलीगेट ने उस कार्यक्रम में भाग लेकर दुनिया को यह साबित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य सेक्टर में जो भी उन्होंने उपाय दी है, इस उपाय सही है और ये वैज्ञानिक है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे अनिल जैन साहब ने जो भी सवाल की है, इस सवाल का जवाब यही है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात G20 में रखी है, one earth, one family, one future. So that's that one. It is for one health. So Vasudeva Kutumbakam. इतने बड़े उन्होंने बात रखी जिसके जरिए आज दुनिया को भी ये बात मानने के लिए सब कोई सहमत है। तो मुझे लगता है कि हमारे अगले दिनों में इस सेक्टर में ऐसे ही
दुनिया का आकर्षण बढ़ाने में हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़े प्रतिबद्ध होकर काम करते रहेंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर वी शिवदासन। Respected Chair, Kerala is known as a land of Ayurveda. I think everybody knows that. From different parts of the world, the people are visited there for the treatment. So, Chairman also participated in the programs there. So, what I am asking to the Minister, there a lot of noted institutions are there, like Kottakkal Institute, Arya Vaidyashala, Thiruvananthapuram Institute, Kannur Medical Colleges are there. But a national level important institute on Ayurveda, because the proper study, research and scientific promotion of the Ayurveda is very necessary. So what kind of initiative from the union government is there? Then what is the plan of the union government to promote the Ayurveda institutes in Kerala? So government have any plan for the national level Honorable Minister. Institute, Ayurveda Institute in Kerala? Honorable So, Minister. माननीय सभापति महोदय, जो सदस्य ने सवाल की है, इसके जवाब में इतना ही कहूंगा कि हम हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर प्रांत को हमारे आयुष सिस्टम से जोड़ने के लिए हमने जो भी कदम उठाए हैं, इसमें केरला भी है। केरला अपना खुद का पहचान भी है। ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन में केरला ने बहुत बड़ा योगदान दी है और इसलिए अगले दिनों में निश्चित रूप से हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के मुताबिक अगर प्रपोजल वो दे तो निश्चित रूप से इस विषय पर हम विचार करेंगे। Fifth supplementary, Madam Koinak. I'd like to ask the Honorable Minister, under capacity building and continuing medical education component of Ayurgyan scheme, does the ministry have plans to train Ayush doctors and other personnels in the rest of the states not yet covered in the country, and especially northeastern states of Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, and Tripura? Thank you. Honorable Minister. मैं मैडम को धन्यवाद देता हूं माननीय सभापति जी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से है और मैं भी नॉर्थ ईस्ट से हूं और सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट को विकास के रास्ते पर तेज से चलने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दी है, बहुत बड़ा मेहनत की है। I was also there in Northeast for 3 years. Thank you, sir. So that is a priority sector for our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has given everything for the speedy growth of Northeast. That's why I, being a North-sterner, I am especially grateful to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And in this regard, so far 33 integrated Ayush hospitals were approved, and 9 are functional, and 33 integrated Ayush hospital are already under different stages of implementation, and more than 850 numbers of health and wellness centers are being improved. So I believe that's the way we are trying to make Northeast very much sensitive in this regard in the sector of education, research and training, as well as for hospital better facility. Thank you. Question number 18, Shri Neeraj Dangi. Question number 18. Honorable Minister. Supplementary 1, Shri Neeraj Dangi. माननीय सभापति महोदय का धन्यवाद है। सर माइक सर। सर मेरे प्राथमिक प्रश्न का जो 4th भाग है उसका आंसर प्रॉपर नहीं है। मैं समझता हूं कि
पूरा प्रॉपर आंसर आना चाहिए था। मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या वित्त मंत्री जी उन विशिष्ट उपायों या प्रयासों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं जिनकी योजना सरकार बना रही है, या इसके अतिरिक्त डिफॉल्टरों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए लागू की गई है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय और माननीय सदस्यगण, अलग अलग स्कीम के माध्यम से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से अलग अलग सिटीजन्स को जिनको जरूरत है उन देने की स्कीम्स है, जिसके माध्यम से वो व्यवसाय करें और व्यवसाय के बाद उनका इनकम बढ़े। जिसमें मैं बताना चाहता हूँ, मुद्रा लोन स्कीम है। मुद्रा लोन के माध्यम से अलग अलग जैसे अलग अलग स्कीम्स है, और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं जिनके इनकम के लिए है, और जो इनकम बढ़ाने के लिए जो आप दिया है, जैसा आरबीआई गवर्नर के आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस है, जिसके एनपीए जो है, जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उनको भी कुछ लोन देना नहीं चाहिए। उसके बाद देयर इज सम यूनिट्स विच आर डिबार्ड फॉर गिविंग द लोन्स फॉर द विलफुल डिफॉल्टर्स, उनको भी लोन देना नहीं चाहिए। इसके बाद इन सरकार के माध्यम से 2018 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया था। वो कोड के माध्यम से अगर अकाउंट एनपीए हो गया तो उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट ऑफिस के केस हो सकती है। सम फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 2018 में एक्ट लाया है, जो जिनके माध्यम से बड़े अकाउंट एनपीए हुए और जो इंडिया में रहते नहीं, उनके ऊपर भी केसेस हो रही है और उनका ये हो रहा है। इसके बाद लुकआउट सर्कुलर भी दिया जाता है बैंक के माध्यम से, जिन्होंने लोन का बराबर रिटर्न नहीं किया है। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो लोन्स रिटर्न नहीं करते उनके फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को एक क्रिसिलियस माध्यम से सर्कुलर जाता है, जिन्होंने ज़्यादा लोन लिया है उनका सभी को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो एक तो जो एनपीए अकाउंट कम होना चाहिए, बैंकों की वसूली अच्छी तरह से होना चाहिए, उसके साथ कुछ इनकम और कुछ इनकम जनरेटिंग स्कीम्स भी है जो मैं बताना चाहता हूँ। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री नीरज डांगी। सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री ऋण लेने वाले गारंटर्स के है जो गारंटी देते हैं। वित्त मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऋण न चुकाने के मामलों में गारंटरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कोई विधायी या नियामक परिवर्तन विचाराधीन है? यदि हाँ तो उसकी डिटेल्स, उसका ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय और माननीय सभागृह, मैं आपसे वो बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभागृह को बताना चाहता हूं कि जो बारोअर है उतना ही इम्पोर्टेंट गारंटर है। अगर गारंटर के उन्होंने साइन किया होगा, बैंक के पेपर साइन किया होगा, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इक्वल लायबिलिटी देने का और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। जैसे माध्यम से जो अलग अलग कार्रवाई जो की जाती है, बैंक के माध्यम से उनके ऊपर सिविल सूट या डीआरटी कोर्ट में केस हो जाती है। उसके बाद सरफेसी एक्ट 2002 के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 16 के माध्यम से भी कार्रवाई हो जाती है, और ये इन सभी चीजों से उनके ऊपर गारंटर के वो अलग ना सोचते हुए उनके माध्यम से कार्रवाई हो जाती है। और बैंक, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है लास्ट मंथ, अगर गारंटर ने पैसे साइन किया है तो ही इज आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो गारंटर को कोई सुविधा नहीं मिल सकती, गारंटर इज आल्सो इक्वलेबल एज अ कस्टमर। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री बिनोय विश्वम। You, sir. Sir, there is a magic word by the government, which is called haircuts. And the government claimed that with that magic, the willful defaulters are handled, and the NBS are settled, and the government has made wonders. Your supplementary. Can the government be kind enough to tell the House the amount of haircuts made by the banks and the government for the willful defaulters who are the corporate houses? Thank you, sir. Honorable Minister.
it's not the government which suggests saying take this haircut or take that level of haircut. There is an established mechanism through which the committee of creditors decides on the basis of the proposals which are before them to see what is the best solution which can be offered. So first, I would like to dispel the impression that the honorable members having and also probably putting before this house that the government decides on how much has to be the haircut. Not at all. There is an institutional bylaw mechanism which decides on how the creditors are going to be paid back. So I would like, first of all, that thought to be removed. And if that thought is removed, there is no further answer required, according to me. For supplementary, Shri Jawahar Sarkar. Sir, this question has been replied to in terms of receding amounts of bank loans, bank write-offs. Fair enough. The point that I want to ask is that are we making international comparisons? Because the IMF data released every 6 months shows that the average loan write-off, average bad loan, what we call GNPA to total loan, GNPA to gross NPA to total loan is around 1% to 1.5%. India went up to 11%. A humongous 11%. Forget the history. Your supplementary. My supplementary is government making comparisons with international norms to understand how good or how bad we are? Honorable Minister. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चंस हमें राइटिंग में भी पूछा था और मैं बताना चाहता हूं रिटर्न ऑफ लोन, राइट ऑफ लोन, या इट डजंट मीन वी आर गिविंग द वेविंग ऑफ द लोन. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अगर बैंक ने राइट ऑफ लोन किया तो उसी का बैंक प्रोविजन करती है और जो कार्रवाई होना चाहिए, जैसे मैं पहले बताया, वो कार्रवाई पूरी तरह से जो अकाउंट जिनका एनपीए है, जिनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, जिसमें डीआरटी कोड से हो, इंसॉल्वेंसी आईबीसी कोड हो, या सभी कार्रवाई हो जाती है. अभी जो क्वेश्चन पूछा है कि जिसमें जो एनपीए के बारे में भी उन्होंने सवाल पूछा था 11.4, अगर मैं बताना चाहता हूं तो 11.4 जो हुआ था एनपीए, दैट वाज इन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आ गई और ये सरकार आने के बाद 4 साल बैंकों को प्रोविजन करना पड़ा. इसीलिए और उसके बाद ऐसा कोई भी फोन बैंकिंग नहीं था, कुछ इंटरफेरेंस नहीं था बैंक में, इसीलिए 4 साल एनपीए बढ़ता गया. लेकिन अगर हम देखें तो एनपीए इतना कम हो गया है कि अराउंड 2% के आसपास है. एक मैं फिगर देना चाहता हूं जिसमें अकाउंट अगर हम देखें एनपीए तो 2.06 करोड़ से 5.72 लाख इतना एनपीए कम हो गया है. तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि राइट अप और वेव अप में फर्क है. नंबर 2, जो कुछ एनपीए हुआ था वो पहले इसमें हुआ था और एनपीए का परसेंटेज भी मेरे पास मैं बताना चाहता हूं. 2022-23 में शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एनपीए 3.87% है, पब्लिक सेक्टर बैंक का 4.97% है और प्राइवेट सेक्टर बैंक का 2.29% है. ये ग्रॉस एनपीए है. अगर हम आफ्टर राइट ऑफ करने के बाद अगर नेट एनपीए अगर देखें तो 0.95, 1.24 और 0.055 इतना नेट एनपीए है. तो जो 2018 में जो माननीय सदस्य ने फिगर दिए 2018 की फिगर है, 2018 से 2022 तक कंटिन्यूअसली एनपीए कम होते जा रहा है. और मैं बताना चाहता हूं सभी सभागृह को कि अभी बैंक का पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक का अगर सितंबर टू सितंबर लास्ट ईयर का अगर हम लास्ट ईयर का तो 1,04,000 करोड़ का बैंक प्रॉफिट में, और दिस ईयर मींस सितंबर टू सितंबर आई एम सेइंग द प्रॉफिट इज अराउंड 1,32,000 crore. All banks are in profit. NPA is going down, and under the माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और बैंक अच्छी कर रहे हैं. Fifth supplementary,
Sri Jairam Ramesh. Sir. Honorable Minister. I just would seek your permission, sir, to say the question has not been answered. It's absolutely been answered. NPAs gross and NPAs net are coming down. And if the, let me finish. One second. Are coming down. And the numbers are before me. I'd like to read for those who think, no, we are hiding facts. No, I will read by year. The net NPAs coming down. An honorable member Jawahar Sirkar's question about would you want to compare it with the West? I just want to give one line, sir. If NPAs are coming down in India, and steadily at that, at every year's number shows, which I'll read it out, and would the honorable member please carefully notice that banking distress, whether in Germany or in the US, and the banks which are going bust in the US, if that has not been kept in the back of the mind of the member, and he still would raise, would you do international comparison? This is the comparison which speaks for itself. So if you want me to name by country and then by India's banks comparison, it's hair-splitting. You are, as a senior member of the House, aware that even last year, major bank collapses happened both in the United States of America and in Switzerland and in Germany. And here we are showing you figure year after year about NPA coming down. Doesn't that indicate the health of the banks in both these countries? Not only NPAs coming down, profit margins going up of the banks. So for the sake of the member who would want to persist on this question, I would seek his intelligence as much as yours, sir, in kindly listening to this number. Public sector banks, scheduled commercial banks, I would read both, first the scheduled commercial banks and the public sector banks, subsequent. Net profit, net NPA ratio reduction. The high point was 2017-18, when scheduled commercial banks had a 5.94% of NPAs. And public sector banks had 7.97. Next year, it comes down to 3.65. Public sector banks comes down to 4.80. And subsequently, 2.81, 3.76, 2.39, 3.11, 1.67 to 2.19, and 22-23, sir, it's come down, the scheduled commercial banks' net NPA ratio as a percentage has come down to 0.95. And it has come down to 1.24 in public sector banks. Honorable Minister. Oh, sorry, sir. Oh, sorry, sir. They're drawing me to the temptation. Honorable. Member Yagnik is a very senior member, a lawyer. She knows the technical terms, terminologies. From Write off and waive off. Come on. I hope the member of this House are not going to be tired of us repeatedly saying, what is a technical write-off? What is a waive off? To go on asking this question. I'm not going to be tired to reply. But waive off and write off. Is this wanting a second reply? We've repeatedly said. I would urge Jawahar Sarkar, a very experienced senior member, to word his question directly, pinpointed. Gross NPA total load is a percentage that is internationally accepted. Year by year comparisons are given out, and it is 1 to 1.2% on an international average. India has not come anywhere across it in the last 8 years. Would the minister, who has read so much, who has been kind enough to intervene, give us a year by year comparison of the IMF standard or the IMF accepted international standard of gross NPA to total load? Okay, Mr. Sarkar, India's. Please, sir. I would, please. Honorable Minister, Honorable Minister, one second, please. Honorable Minister, may pardon my ignorance. Your minister used an expression, phone banking. What does that mean? Which one, sir? Phone banking.
phone banking. Thank you, sir. That would take me back. If you go in the literal term, it's okay. Sir, thank you for giving me this opportunity. Phone banking was that time when in Indian banking, people would call the banks and say, so-and-so would come to seek a loan from your bank, please grant it. Meaning, don't have to look at his eligibility or his credit ratio. You must have to give him. So actually, sir, today when this debate is being really hot enough to talk about gross NPA, IMF standard, measuring NPA versus the gross profit of the total loans issued, and so on, the heart of the problem was when during the 10 years of the UPA's ruling between 2004 and 14, phones were used to ask for delivery of loan to customers who were not worthy of being given a loan. The burden fell on us to sort the Indian banks out with reforms, identifying, first of all, the 4 R's that we talk about. Prime Minister Modi sat with all of us and sat with the entire, my predecessor spent a lot of time, Sri Jaitley spent a lot of time understanding where the problem was and working together with the Reserve Bank of India. So the phone banking was the method through which the political interference spoiled all our banks and drove them to loss-making situation. Today, if enthusiasm is shown on asking questions about NPAs, it is, first of all, look at the problem which contributed to NPAs and made Indian banks actually having a twin balance sheet problem. And the twin balance sheet problem made the Indian economy come down to being a fragile economy. That fragile economy today is the fastest growing and a rate of 7.6 in the last quarter. So please, kindly do recognize these things before questions on NPAs are asked. Shri Jairam Ramesh, the last supplementary. Sir, thank you for giving me the opportunity finally for asking a supplementary. Sir, yesterday, the Honorable Finance Minister answered a question in the Lok Sabha and said that there are 2,623 willful defaulters who owe the banks 1.96 lakh crores. Now, I would like to ask the Honorable Finance Minister, what extra and special steps are being taken to deal with willful defaulters? Because a willful defaulter, by definition, is a deliberate defaulter. He is full of will to default in the first place. So I would like to ask the Honorable Finance Minister, without getting into the history, 2,623 individuals own the bank's 1.96 lakh crores. Would she consider naming and shaming them so that there is pressure on these Honorable Minister. Sir, action is being taken on willful defaulters. My answer in the Lok Sabha is actually indicative of banks taking steps towards getting the money back from these people. Action, again, I'll just highlight the cases because that will specifically answer a question raised by the Honorable Member. As of 31/3/2023, the legal suites for recovery were filed against 13,978 accounts. Action under SARFAESI have been initiated in 11,483 cases. FIRs have been filed in 5,674 cases. Aggregate amount of 33,801 crores have been recovered till 31/3/2023. The amount recovered is 33,000. Sir, therefore, the actions, and also there was a time, I think I've answered a parliament question about cases taken up by the ED. Now, why do I bring that here specifically? The money is recovered and the money is returned to the banks themselves, subject to correction, because I'm just saying it out of my memory. More than about 13,000 crores have been given to the banks from these defaulters on whom PMLA cases have resulted in action through the Enforcement Directorate.
So monies are being recovered through CBI cases, monies are being recovered through SARFAESI. So specific action through the various legal provisions are being taken, and as a result, monies are going back to the banks. Now, as on 1st December 2023, just a couple of days ago, assets amounting to 15,186.64 crores have been confiscated by the ED. I want this specifically on the record. 15,186.64 crores have been confiscated by the ED, out of which amounting to 15,183.77 crores have been restituted to the public sector banks. That amount where I said subject to correction 13,000, I stand corrected. The amount is more than 13,000. It is 15,183.77 crores, which have been restituted to the bank. So the bank, the phone banking, NPA, what goes to the bank? This is the kind of constant action being taken by the CBI, ED, and the income tax and others, that money, both from the willful defaulters and from others who owe the Consolidated Fund of India, the money which has to go back through the banks or otherwise directly, are being put back. So this 15,183.77 crores is under the PMLA. Furthermore, sir, PMC Bank has recovered, I'm sure many from Maharashtra will be interested in knowing about this. PMC Bank has recovered 104.02 crores with active cooperation and support of ED. Assets amounting 692.89 crores have been confiscated under the provision of the FEOA 2018. So monies are constantly being recovered, not small amounts, huge amounts, which are going back to the public sector banks. Thank you, sir. Question number 19, Sri Mukul Balkrishan Vasnik. Honorable Minister. Table the House. Sir, supplementary. Sri Amar Patnaik. So it's really laudable that we are on track as far as achieving the non-renewable component in the energy consumption basket. So, but I have a worry, sir. There is a report which says that Orissa has a potential of 1.5 lakh megawatt of solar energy, much greater than the assessment made by government. In the reports, in the answers which you have been furnished by the department, this is projected at 465.23 megawatts. So if this potential is harnessed for every state, do we think that we can actually have much larger component of non-renewable sector in our energy consumption basket, in which case net zero actually becomes net positive for us. And we could actually be showing to the world that we are having a growth strategy which is much more greener than even what was anticipated world over. Honorable Minister. Mr. Chairman, sir, what the honorable member read out was the established solar capacity in Orissa, not the potential. So the potential is much more. What is happening, honorable Chairman, sir, is that we set up capacity through open bids, and naturally capacity is set up where, with preference to areas where the solar insolation is the highest or the wind speeds are the highest. So therefore, I mean, the solar insolation is not the highest in Odisha. The solar insolation is higher, much higher in Rajasthan or Andhra Pradesh, etc. So the preference by developers is given to these areas. And the whole country is connected by one grid. Therefore, it makes sense to harness solar potential in those areas first, where the insolation is higher so that the cost of power is less. And Mr. Chairman, sir, as the honorable member himself noted, actually, we are not only doing satisfactorily, we are doing very well. In fact, what we did was,
that we had pledged that by 2030 we'll have 40% of our capacity coming from non-fossil fuel sources. We achieved that in 2021. That's 9 years in advance. And today, our established capacity is about 186,000 megawatts, which is about 43% of our total established capacity. The target which we have said we'll achieve by 2030, that's 50% of our established capacity, we'll achieve before that. Because right now, apart from 186 gigawatts which has been installed, I have another 114 gigawatts which is under installation. Now, if you add all these, it comes to 300 gigawatts, 300,000 megawatts. And by 2030, my total established capacity would be in the region of about 780 gigawatts. So 50% of that is in the region of about, let's say, 373 gigawatts. So I just have to add about 80 gigawatts more. We'll achieve this target well in advance. Dr. C.M. Ramesh. Potential at a low level, then we will be only achieving that target. But if we actually, whatever figures have been mentioned, your wind energy, solar energy, hydropower energy, if our potential is even higher, then we should actually target to actually achieve that, in which case we will have much better potential to achieve a higher growth rate, and even our fossil component can become even more. Well, the Honorable Member can meet the Honorable Minister in his chamber. Dr. C.M. Ramesh. As per the Minister said rightly now, to achieve the goals, every year we had to do 30 gigawatts, solar I'm telling about the solar. But doing the 30 gigawatts solar, now our manufacturing solar panels in India is not matching, not even 10 gigawatts. Some of the, whatever we are manufacturing, now in the USA there is a lot of demand. Now majority of the manufacturers, they are sending to the USA, and we are not importing because of BCD 30-40% tax. Now how to achieve this, Minister has to explain now. Honorable Minister. One, of course, is my friend Mr. Patnaik. Our ambition is not limited to achieving 50% of our capacity. In fact, our ambition is much higher. As the Prime Minister announced, by 2030, we'll have 500,000 megawatts of established capacity coming from non-fossil fuel sources. So actually, our ambition is much higher. Now, I already have 300 gigawatts, 300,000 megawatts established. I have to establish about 200 gigawatts to get to 500 gigawatts. So we've laid down a trajectory of bidding out 50,000 megawatts every year. So that will actually take us to another about, we have 6 years left to 2030. Thank you, if I add 50 gigawatts every year, that will take me to 600 gigawatts. So I'll be ahead of that target as well. Now, the problem is about the problem which my friend Ramesh mentioned. The House was about will meet. the availability of solar cells and modules. The Honorable Member may interact with the Honorable Minister. Right. The House will meet again at 2 p.m. today.
Hello and a very warm welcome, viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host, Kriti Mishra. India's criminal justice system is set for a complete overhaul. The government has introduced 3 key bills to replace colonial-era courts with the objective of speeding up trials by laying down specific timelines, boosting rates of conviction by improving the quality of evidence, and providing relief and protection to victims. So what are the key provisions in the bill? What are the major recommendations of the Parliamentary Committee on Home Affairs? Well, we've packed everything for you in this edition, so come along. India's criminal justice system has been predominantly shaped by laws and regulations inherited from the British colonial era. In the post-independence years, these legal foundations underwent alterations and amendments to align with the evolving requirements of modern times. The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Code of Criminal Procedure, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people of India. The pre-independence criminal laws were used by the British to protect their colonial interests, to rule the people and the country, and to maintain their authority and supremacy over India. There was a need for comprehensive review of the criminal laws, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, and the Indian Evidence Act.
and adapt them according to the present-day needs and aspirations. In fact, Prime Minister of India also advocated for the need to revamp all the legislations enacted across all departments during the British era. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। In accordance with the basic principles enshrined in the Constitution of India, it was proposed to bring about fundamental comprehensive changes in the framework of Indian criminal laws. With this objective in view, the existing Indian Penal Code of 1860, the Code of Criminal Procedure 1973, and the Indian Evidence Act 1872 would now be repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Sakshi Bill 2023, respectively. The Home Affairs Minister introduced these three key bills in the Lok Sabha on 11th of August 2023. ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा. The main problems in present legal system are very complex. There's huge pendency of cases in the courts. There's low conviction rate, and the amount of fine prescribed in the laws is very less, from 10 rupees to 500. There's overcrowding of under-trial prisoners in prisons. There's very little use of modern technology in the legal system. And there's delay in investigation, pending hearing process, and delayed justice due to inadequate use of forensic evidence. The new bills seek to historically address the problems in the criminal justice system to strengthen law and order, simplify legal procedure, provide speedy justice, and adapt the criminal justice system with the technological advancements. Further, all the outdated references have been deleted in the proposed bills. These bills seek to create a legal structure which is citizen-centric and to secure life and liberty of citizens and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 repeals the Indian Penal Code 1860. Key changes proposed in the bill include sedition. IPC defines sedition as bringing or attempting to bring hatred or contempt or exciting disaffection towards the government. It is punishable with imprisonment term between 3 years and life imprisonment and or a fine. The bill removes this offence. It instead penalizes the following: exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities, encouraging feelings of separatist activities, or endangering sovereignty or unity and integrity of India. These offences may involve exchange of words or signs, electronic communication, or use of financial means. These will be punishable with imprisonment of up to 7 years or life imprisonment and a fine. Terrorism. The bill defines terrorism as an act that intends to threaten the unity, integrity, and security of the country, to intimidate the general public or disturb public order. The bill also penalizes conspiring, organizing, or assisting in preparation of any terrorist act within an imprisonment term between 5 years and life imprisonment and a fine of at least 5 lakh rupees. Petty organized crime. The bill makes attempting or committing petty organized crime punishable with imprisonment between 1 and 7 years and a fine. Death penalty for gang rape of minor. IPC allows death penalty for gang rape of women below 12 years of age. The bill now allows death penalty for gang rape of women below 18 years of age. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Code of Criminal Procedure 1973. The code provides for procedure for arrest, prosecution, and bail for offences under various acts, including the Indian Penal Code of 1860. The highlights of this bill are trials in electronic mode. The bill provides that all trials, inquiries, and proceedings may be held in electronic mode.
It also provides for the production of electronic communication devices likely to contain digital evidence for investigation, inquiry, or trial. Electronic communication includes communication through devices such as mobiles, computers, or telephone. Forensic investigation. The bill mandates forensic investigation for offences punishable with at least 7 years of imprisonment. Timelines for procedures. The bill prescribes timelines for various procedures. For instance, it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigating officer within 7 days. Trial in absence of offender. The bill provides for conduct of trial and pronouncement of judgment in the absence of a proclaimed offender. This shall be done when such a person has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him. The Bharatiya Sakshi Bill 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Indian Evidence Act of 1872. The Act provides rules for the admissibility of evidence in legal proceedings. The highlights of Bharatiya Sakshi Bill are admissibility of electronic or digital records as evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper records. It expands electronic records to include information stored in semiconductor memory or any communication devices like smartphones or laptops. Oral evidence. Under the Act, oral evidence includes statements made before courts by witness in relation to fact under inquiry. The bill adds any information given electronically to be considered as oral evidence. Secondary evidence. The bill expands secondary evidence to include oral and written admissions and the testimony of a person who has examined the document and is skilled in the examination of documents. दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, इसीलिए फोरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया। The need to reform and rationalize the Code of Criminal Procedure, as also the need to undertake a comprehensive review of the criminal justice system of India, has been expressed from several quarters from time to time. The Law Commission of India, in its various reports, has recommended several amendments in the criminal